Hello guys, I hope you're doing very well. My name is Ravi Singh. I'm a professional IELTS trainer having more than 15 years of experience. And welcome to this punctuation playlist. आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं another very important punctuation mark semicolon. अगर आप भी punctuation mark को accurately use करना सीखना चाहते हैं in order to achieve 8.5 to 9 band score in IELTS writing, then stay with me until the end of this video. I guarantee you, you will definitely master the use of semicolon after watching this video. And if you are new to my YouTube channel, you can subscribe to my YouTube channel and hit the notification button to receive much needed, highly accurate IELTS and English boosting videos. Okay, so without wasting time, let's get down to work. Okay, सबसे पहले हम देखेंगे semicolon use 1. Okay, so read with me. You can use semicolon to connect two closely related independent clauses, and they should have close logical connection. We can use semicolon in place of coordinate conjunction such as fan voice, for, and, nor, but, or, yet, so. जब भी हम दो independent clauses को connect कर रहे हैं, so हम semicolon की help से उन्हें connect कर सकते हैं, but इन दो clauses में logical connection होना चाहिए, okay? And हम semicolon को fan voice या coordinate conjunction की place पर भी use कर सकते हैं, okay? So now we have little note. Make sure the letter following the semicolon should not be capital. So semicolon के बाद जो भी sentence आएगा उसका first letter capital हमें नहीं करना है, okay? So उसको small letter में लिखना होगा. So let's take two examples. So हमारे पास first example है population explosion has become worldwide concern. Then हमने semicolon use किया है. It is rising even more quickly in developing countries. So हमारे पास दो clauses हैं. Population explosion has become worldwide concern, and it is rising even more quickly in developing countries. So ये दो clauses जो है इनमें एक logical connection है. ये दोनों ही population explosion पर या population पर based है, इसलिए हमने इसे semicolon की help से connect किया है. Okay? So हमारे पास second example है being a health conscious person, I order just a soup. My friend, being a greedy glutton, ordered a great amount of food. So ये जो sentence है जो हमारी eating habit पर based है, so इनमें भी एक logical connection है. जो first sentence है being a health conscious person, I ordered just a soup. And then हमने semicolon को place किया है, okay? उसके बाद नया sentence शुरू हो रहा है my friend, being a greedy glutton, ordered a great amount of food. Okay? So इन दो clauses में एक logical connection है जो दोनों ही हमारे eating habits पर base हुए हैं. Okay? So let's read further. Do not use conjunctions such as and, but, or with semicolon. If you want to use this conjunction, then use comma. So जब भी आप semicolon use कर रहे हैं, जैसे यहाँ, so make sure coordinate conjunction को use ना करें, okay? अगर आप coordinate conjunction को use करना चाहते हैं, then if you want to use this coordinate conjunction, then use comma, जो कि मैंने अपनी comma uses की वीडियो में बताया था, okay? So let's read. Note: if you replace semicolon with comma in examples above, it would result in comma splice mistake. अगर सपोज करें अगर हम इस सेमिकोलन को रेज करके जब हम कोमा लगाते हैं तो इसको कोमा स्प्लाइस की मिस्टेक आ जाता है. अगर जब भी हम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कोमा की हेल्प से कनेक्ट कर रहे हैं इसे कोमा स्प्लाइस की मिस्टेक आ जाता है. जब भी कोमा की जगह पर कॉलन सेमिकोलन को यूज़ करना हो सो हम कोमा यूज़ कर रहे हैं, सो उसे कोमा स्प्लाइस की मिस्टेक कहते हैं. ओके, लेट्स टेक 3 एग्जांपल्स. सो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हैज़ बिकम वर्ल्ड वाइड कंसर्न. सो हमारे पास सेम सेंटेंस है जैसे हमने जहाँ सेमिकोलन की हेल्प से कनेक्ट किए हैं दो क्लॉज. ओके, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हैज़ बिकम वर्ल्ड वाइड कंसर्न एंड
it is rising even more quickly in developing country. So same sentence can be written in the different way as we have written here. Okay, this is a correct version. So same sentence को हम दूसरी फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, सेमीकोलन को रिप्लेस कर सकते हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शन की हेल्प से. ओके, बट जहां हमें कोमा यूज करना पड़ेगा. ओके, जहां सेमीकोलन यूज नहीं करेंगे, जैसे मैंने ऊपर मेंशन किया है, we can use semicolon in place of coordinate conjunction. Okay, so let's take one more example. Population explosion has become worldwide concern. Same sentence हमारे पास, it is rising even more quickly in developing country. But जहाँ हमने ना सिर्फ कोमा यूज किया है, जब भी मैंने बताया था दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को सेमीकोलन की हेल्प से कनेक्ट करना है, बट हम कॉलन यूज़ कर रहे हैं, नो हम कोमा यूज़ कर रहे हैं, तो इसे कोमा स्प्लाइस की मिस्टेक कहते हैं. ओके, जैसे जहाँ कोमा स्प्लाइस की मिस्टेक मैंने मेंशन की है. ओके, सो क्योंकि ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, सो इनको हमने कोमा की हेल्प से कनेक्ट किया है, बट जहाँ हमें यूज़ करना पड़ेगा या तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन या फिर सेमीकोलन. ओके, सो वी हैव वन मोर एग्जांपल. बीइंग अ हेल्थ कॉन्शियस पर्सन, I ordered just a soup, but my friend, being a greedy glutton, ordered great amount of food. So same example जो मैंने ऊपर mention की है, ये हमारे पास same example है, but जहाँ हमने किया था semicolon use, but जहाँ हमने use किया है coordinate conjunction but जैसा कि मैंने बताया है coordinate conjunction के साथ हमें comma use करना पड़ेगा जब भी दो independent clause को connect कर रहे हैं. Okay, So let's take a little review. So जब भी आप दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को कनेक्ट कर रहे हैं, एंड दिस जो भी दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, इनमें अगर लॉजिकल कनेक्शन है, सो आप सेमीकोलन को यूज़ कर सकते हैं. ओके, अगर आप सेमीकोलन यूज़ नहीं करना चाहते, सो आपको कोऑर्डिनेट कंजक्शन यूज़ करना होगा, जैसे कि फॉर, एंड, नॉर, बट और येट. सो बट उसके साथ आपको कोमा यूज़ करना पड़ेगा. अदरवाइज अगर आप सेमीकोलन की जगह पर सिर्फ कोमा यूज़ करते हैं, इसे मिस्टेक कहा जाएगा. ये होगी कोमा स्प्लाइस की मिस्टेक. सबसे ज़्यादा एज स्टूडेंट यही मिस्टेक करते हैं. ओके, सो लेट्स टेक little quiz. Okay, so you have two sentences, you have to find mistakes. We had the first sentence, I saw a big ferocious lion and it was feeding on the carcass of the wildebeest. So find the mistake. You have 5 seconds. Very nice. So here's the mistake. We do not need to use semicolon. जहाँ हमें कॉलम पुट करना होगा, क्योंकि जहाँ हमने कोऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज़ किया है, एंड जैसे कि मैंने बताया था कोऑर्डिनेट कंजक्शन के साथ हमें कोमा यूज़ करना है. ओके, अगर आप सेमीकोलन यूज़ करना चाहते हैं, देन हमें एंड को रेज करना होगा. ओके, सो देन वी हैव वन मोर टेस्ट. मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन. इट कैन हेल्प यू टू लिव अ फुलफिल्ड लाइफ. फाइंड मिस्टेक. 5 seconds. Yeah, very nice. You're learning well. Okay, so here we have to put semicolon. Okay, money is very important for human. It can help you to live trouble-free life. Okay, comma हमें erase करना होगा क्योंकि ये comma splice की mistake show कर रहा है. Okay, जब भी हम दो independent clauses को connect कर रहे हैं, हमें semicolon use कर सकते हैं या फिर coordinate conjunction use करेंगे. Okay, so let's move on to our second semicolon use. Okay, so read with me. You can use semicolon with serial list. Put another way, you can use semicolon to divide long items of list, and if these items already contain other punctuation marks such as commas and colon. तो जब भी आपके पास कोई लिस्ट है जिसमें already other punctuation mark यूज कर रहे हैं, so इस लिस्ट को हम semicolon की हेल्प से सेपरेट कर सकते हैं. Okay, here we have one example. It will clear everything. So there are 3 ways an ordinary person can help save environment. So we have the 3 ways. So it means we have 3 ways. हम एक लिस्ट देने जा रहे हैं आफ्टर द कॉलम. ओके, कॉलम को यूज करते हैं लिस्ट ऑफ आइटम्स देने के लिए. ओके, सो हमारे पास फर्स्ट लिस्ट है, जैसे कि आइटम है वॉकिंग, बट हम क्या कर रहे हैं, फर्स्टली हमने वॉकिंग को मेंशन किया है, बट उसके साथ हमें पंक्चुएशन मार्क यूज कर रहे हैं, कोमास. ओके, एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वॉकिंग की, विच बीइंग अ हेल्दी एक्टिविटी कैन हेल्प टू रिड्यूस सिटी ट्रैफिक. सो देन हम सेकंड आइटम देने जा रहे हैं, यूज ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स. ओके, सो
इसको हमने सेपरेट किया है सेमीकोलन की हेल्प से, क्योंकि हम ऑलरेडी काफ़ी पंक्चुएशन मार्क यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि कोमास। ओके, सो ये एक एक्यूरेट मेथड है। एक्यूरेसी को शो करने के लिए हम ऐसे सेमीकोलन यूज़ कर सकते हैं जब भी हमारी लिस्ट काफ़ी लेंथी है और या फिर काफ़ी और पंक्चुएशन मार्क यूज़ कर रहे हैं। ओके, सो विच कैन हेल्प रिड्यूस एयर पोल्यूशन। ये सेकंड जो हमारी आइटम है, यूज ऑफ इलेक्ट्रिक कार, उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन आ रही है। ओके, उसके बाद हमारी थर्ड आइटम आ रही है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जो उसकी भी एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है, विच कैन बी मोस्ट इफेक्टिव ऑप्शन। तो इसमें हमारे पास 3 ऑप्शन है, वॉकिंग एंड यूज ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ओके, सो इनकी हमने एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है, जैसे कि कोमा को यूज़ करके, इसलिए हमने इन तीनों को सेमी कॉलन की हेल्प से सेपरेट किया है, जैसे कि जहाँ, ओके, एंड यहाँ। ओके, सो एंड दिस इज वेरी accurate method, but before you use make sure you put that particular type of semicolon used into practice. Okay. Okay, let's move on to our semicolon use 3, which is very important for IELTS essay writing. Okay, so pay focus, please. Okay, let's read first. You can use semicolon when you connect two independent clauses with conjunctive adverbs such as moreover, however, therefore, accordingly, nevertheless, consequently, likewise, otherwise, as a consequence. Okay, ये सारे ही हमारे कंजक्टिव एडवर्ब्स हैं। ओके, इनको कनेक्ट करने के लिए हम सेमीकोलन का यूज़ करते हैं। ये काफ़ी कॉमन स्ट्रक्चर है आईएलटीएस ऐसे में, जब भी हम कॉज एंड इफेक्ट का स्ट्रक्चर दे रहे हैं। ओके, जहाँ हम सेमीकोलन को यूज़ कर रहे हैं। ओके, वी हैव 2 एग्जांपल्स एंड यू कैन इजीली कम टू नो हाउ टू यूज द सेमीकोलन। ओके, फर्स्ट वी हैव people are using more and more fossil fuels. So J part जो सेंटेंस है, जो सेंटेंस है, ये हमारा कॉज शो कर रहा है। पीपल आर यूजिंग मोर एंड मोर फॉसिल फ्यूल, ये कॉज है। सो इसका इफेक्ट क्या रहा है? सो हमने आगे सेमीकोलन को यूज़ किया है, उसके बाद हमने कंजक्टिव एडवर्ब को यूज़ किया है, जैसे कि कॉन्सिक्वेंटली। ओके, या इसको कहते हैं कंजक्टिव एडवर्ब्स। सो उसके बाद क्या हो रहा है, इसका इफेक्ट क्या हो रहा है कि मोर एंड मोर फॉसिल फ्यूल यूज हो रहे हैं, तो वर्ल्ड इज गेटिंग वार्मर। ये काफ़ी कॉमन स्ट्रक्चर है एंड काफ़ी एक्यूरेट है। ओके, आप यूज़ कर सकते हैं ऐसे राइटिंग में। So, second example है, coronavirus has affected many businesses in the world. So, J cause है, okay? उसके बाद हमने semicolon को place किया है, okay? So, उसके बाद हमने conjunctive adverb को use किया है, such as therefore, okay? So, उसका effect क्या हो रहा है? Coronavirus has affected many businesses. उसका effect क्या हुआ है? Many employees have been laid off. बहुत सारे employees को job से निकाल दिया गया, okay? So, coronavirus has affected many businesses in the world, and then we have used semicolon. So, then we have the conjunctive adverb, then we have the comma, okay? So, many employees have been laid off. So, try to copy the same method into essay writing जब भी आप cause and effect की स्ट्रक्चर को ऐड करना चाहते हैं। ओके, सो नाउ वी हैव लिटिल क्विज फॉर यू। ओके, people do not use this sense of right or wrong before any action. Consequently, they face difficult situations sometimes. Find mistake, 5 seconds. So, semicolon कहाँ आएगा? Very good. Here we have to put semicolon, okay? So, firstly, cause, then semicolon, then conjunctive adverb, then comma, then effect. Okay, so second test. Petrol prices are increasing day by day, therefore people have begun thinking about whether to use a car or not. So 5 seconds, find mistakes. Yeah, very nice. We have to put here semicolon, okay? We have used colon. This is wrong way, okay? So semicolon की help से हम conjunctive adverb को connect कर सकते हैं in order to give effects, okay? Cause and effect structure, and try to use this kind of method in the essay writing. So I hope you understand how to use semicolon, and try to use semicolon in the same manner as you have learned in this video. And if you like this video, you can subscribe to my YouTube channel and hit the notification button to receive much needed English boosting and IELTS related videos.
थैंक यू।